First of all, I will take this opportunity to thank IDI Institute, आदेश सर, गजानन सर, जिनसे मेरी इससे पहले भी बात हो चुकी है. Again, I thank Dr. Avinash sir to give this platform to our young friends in order to dream big and dream to become a civil servant via UPSC. Coming back to the question, sir, I think अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो चल जाएगा. The session, I am more comfortable in English, but I will try to bring in Hindi as and when I can. Uh, so coming back to the question, अगर हम prelims की बात करें, I have some experience. मैंने लगातार 4 years prelims examination decently अच्छे से cross किया है with a very good margin. This year I got 105 in the GS and 97 in the CSAT. So I have some understanding of prelims. Uh, 3-4 generic points, but very important points in my opinion are: number one, आपका knowledge base बहुत अच्छा होना चाहिए. There should be no major knowledge gap. Meaning, prelims के जो 5 to 6 major subjects है, economics, polity, science and tech, environment, history, art and culture, along with current affairs of all these subjects, they account for around 60 to 70 questions of the 100 questions. And अगर उसमें आप थोड़े और बाकी सब्जेक्ट्स जोड़ दो, ज्योग्राफी, IR, ये सब, तो these are the subjects which are common for prelims and mains, and their static part carries the highest weightage. अगर आपकी इस पे ज़बरदस्त पकड़ हो, आपका फाउंडेशन अच्छे से किया हो, आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसका करंट अफेयर्स आपने न्यूज़पेपर से आगे जाके कोई मैगजीन से किया हो, then you will never be trapped into prelims, क्योंकि आपका नॉलेज बेस सॉलिड हो गया है. Part second step is uh, developing your judgment of which questions are to be solved and which questions are to be left. ये judgment prelims के लिए essential है, because at the end of the day all the serious aspirants, जो भी एक 10-15 हज़ार aspirants जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है 1 साल 2 साल और more than that, have a similar knowledge base, and the differentiation will come only in those questions where there is a lot of ambiguity. Only one is correct, only two is correct, but you are able to eliminate one or two options. So that will be the second part. Third will be developing the temperament to deal with the stress of the examination. Many of my good friends who otherwise could have cleared this examination very easily, it was a cakewalk for them, did not clear it because they got stressed by the changed pattern of this examination in 2023. Elimination kind of got eliminated. Only one, only two, only three ऐसे options आए थे. So being very honestly, जब मैंने first time ये देखा, I flipped through the pages of the question cum answer booklet and I started to laugh. Okay, they have came up with a curveball. So we have to be ready कि okay, it's difficult. अगर मेरे लिए difficult है तो सभी के लिए difficult है. And let us try not to get intimidated by that. जितना हम अच्छा कर सकते हैं हम कर दें. How to develop this judgment and all is very simple. You have to give mock tests. कोई भी एक ढंग की क्लास के आप दे सकते हो. I think after giving 5 to 10 mock tests, you will develop this judgment. Only giving tests will not help because you will have to work on what is your strength, what is your weakness. आपको हर चीज़ पे ना बारीकियों में जाके घुस के पढ़ाई करनी पड़ेगी. Like ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट क्यों किया? If I was not very sure about it. If this question I have got wrong, so why did I get it wrong? कोई मेरी पढ़ने में कंसंट्रेशन का लैप्स हो गया था क्या? और मैंने लास्ट में जो ऑप्शन पढ़ा था, वो ऑप्शन मार्क करने में मेरे से गलती हो गई थी क्या? बी का मैंने गलती से सी कर दिया था क्या? वॉज इट समथिंग कि पढ़ते पढ़ते माई माइंड कुड नॉट रियली रिकलेक्ट ये था या ये था, सो देर वॉज अ मेमोरी प्रॉब्लम बिकॉज देर वॉज अ लैक ऑफ रिविजन. सो दे कैन बी मेनी डिफरेंट थिंग्स. ये चीज़ हर एक एस्पिरेंट को खुद से फिगर आउट करनी पड़ेगी. देर कैन बी अनदर प्रॉब्लम दैट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं और उसकी वजह से आपका स्कोर नीचे आ रहा है. तो देर कैन बी 17 डिफरेंट थिंग्स वेर यू कैन बी गोइंग रॉन्ग. आपको अच्छे से ये मॉक टेस्ट देने के बाद आप खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा. और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो अ गुड मेंटोर और someone who has cracked this exam, someone who has good experience in clearing this prelims examination, आप आपने उन लोगों का हेल्प लेना चाहिए. अदरवाइज होगा ये कि आप टेस्ट तो बहुत सारे दे दोगे बट यू विल नॉट diagnose your mistakes and you will not work upon your mistakes. So आप
का जो स्कोर होगा वो एक लेवल पे आके प्लेटू हो जाएगा. लाइक फॉर दिस एग्जामिनेशन इफ यू आर गेटिंग स्कोर ऑफ 90, 95, 100, तो आप सेफली सेल थ्रू कर जाओगे. 100 प्लस इज ऑलवेज डिजायरेबल. बट उसके नीचे अगर आपका स्कोर आ रहा है और आप उसे इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो आई थिंक दीज माइट बी सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू माइट बी फेसिंग. अभी सिंस देर आर अराउंड 50 odd days for prelims to come, should I touch this particular part right now, और हम ये आगे करने वाले हैं सर. होस्ट पवन सर. आप कंटिन्यू करो जैसे भी आपको कंफर्टेबल है. ठीक है, तो अभी If प्रीलिम्स की something बात. gets repeated, no issues. Yes, sir. So, since we are talking about prelims, and prelims is just knocking our door, so I think at this particular time we can focus on two, three things. Number one, giving at least 5 mock tests between the prelims and right now, and उसका अच्छे से analysis किया जाए, just like I explained right now. और सेम चीज़ों का मिस्टेक वापस वापस ना किया जाए. एंड टू डू दैट, टेक सम गैप ऑफ एटलीस्ट 3-4 days बिटवीन गिविंग 2 tests, सो दैट यू कुड रिवाइज, यू कैन इम्प्रूव योर सब्जेक्ट. नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा नई चीज़ें अभी ना पढ़े. जो भी नई चीज़ें पढ़ रहे हैं वो लिमिटेड हो. एक पूरा सब्जेक्ट आपने नया अभी तक छोड़ दिया था और अभी पढ़ रहे हो, तो पहली बात तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था एनी मेजर सब्जेक्ट. अगर छोड़ दिया है तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन ओनली की एरियाज. डू नॉट go into reading new areas. The problem of UPSC aspirants since last I'll say 4-5 years is not lack of content. There is perhaps excess of content. तो हमेशा there is an anxiety कि maybe I'm missing out on something new. ये हमें नहीं करना है. हमें एटलीस्ट जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ रखी है उसका 3 से 4 बार मिनिमम रिविजन करना है. अदरवाइज इन द स्ट्रेस ऑफ द एग्जामिनेशन वो चीज़ें याद नहीं आती है. एंड वो चीज़ों में कन्फ्यूजन भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि याद तो आ रहा है बट आई एम नॉट वेरी 100% श्योर, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रैप. आप ये भी मिस्टेक कर सकते हो कि मुझे 100% श्योरिटी नहीं है कि इस क्वेश्चन में मुझे जो चीज़ याद आ रही है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है. विथ रिविजन दिस गेट्स रिजॉल्व. एंड जजमेंट में डेवलप करने का एक उसका डायमेंशन ये भी होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक आपका इंटरनल एक बैरोमीटर लगा दे कि इतना सर्टेनिटी के बाद मैं ये क्वेश्चन को डायरेक्टली टिक कर दूंगा, और अगर ये क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं है तो मैं भी ये क्वेश्चन को छोड़ दूंगा. ये ट्रायल एंड एरर से ही आता है और इसीलिए आपको बेसिकली मॉक टेस्ट बहुत सारे देने होते हैं. So number one, consolidate lot of revisions, 3-4 minimum revisions. Number two, do not read uh, new material. Give at least 5 to 10, at least 5 tests from here onward. उससे ज़्यादा दे सकते हैं तो very good. I will say कि if you are scoring in the range of 90 to 100 plus, then आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं. You will more or less sail through. Coming back to the villain of the last year's examination, which was CSAT. उसमें आई थिंक विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट वी कैन ऑल एग्री कि थोड़ा सा हमें मैथमेटिक्स और जीमैट के सेक्शन पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए. इन द पेपर आपके पास वो थोड़ा कॉमन सेंस भी होना चाहिए था कि अगर मैथ्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो लेट अस स्विच टू कॉम्प्रिहेंशन. और यूपीएससी में देयर इज दिस इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग अमंग द एस्पिरेंट्स. कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका बहुत वीक रहा हो, at some stage in the examination it will get exposed and you will be penalized for that. तो अगर किसी कैंडिडेट का कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट वीक रहा होगा तो उसके लिए दिस एग्जाम वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर. सो द बेसिक आइडिया इज हर चीज में आपका एक बेसिक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी हो जाना चाहिए. समथिंग कैन बी योर मोर फेवरेट, समथिंग कैन बी योर लेस फेवरेट, बट यू कैन नॉट बी वेरी पुअर और वेरी एवरेज इन एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, बोथ फॉर जीएस एज वेल एज फॉर सी सैट. तो सी सैट के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिक्स दोनों अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज ट्रेंड इज दैट कि मैथमेटिक्स का थोड़ा टफ आ रहा है पेपर. परहैप्स यू विल हैव टू गो 1 or 2 लेवल्स डीपर. आपको नई चीज़ें सीखने पड़ेगी. एक्सटेंडिंग इट टू द जीएस पार्ट, यस, अगर आपको ऐसे लग रहा है लाइक मेनी एस्पिरेंट्स हैव अ डिफिकल्टी विद हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सम ऑफ देम आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इकोनॉमिक्स, तो अगर आपने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया है उसमें आपका वीकनेस रह रहा है, इट इज इट माइट गेट एक्सपोज्ड वेरी बैडली अगर उस सब्जेक्ट पे पूरा यूपीएससी ने फोकस कर दिया. सपोज इन हिस्ट्री यू हैव लेफ्ट द मिडिवल इंडिया एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल इन द मॉडर्न इंडिया एंड एंशिएंट इंडिया, और मॉडर्न और एंशिएंट से अगर क्वेश्चन ही नहीं बना तो हिस्ट्री में आपका बड़ा लॉस हो जाएगा. यू विल लाइक बिहाइंड देयर. सो वो बेसिक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट is necessary to clear not just prelims.
but also the mains examination, because there is 70 to 75% overlap between these two exams. uh, that will be from my side for now, sir. बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि ये जो सेशन है ये यूनिवर्सिटी और आईएएस दिल्ली इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज हुआ है। तो कुछ हमारे जो मित्र है जो कि विश्वविद्यालय में स्नातक छात्र है, तो वो अभी से अगर कुछ तैयारी करनी उनकी है उनको है तो किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और किस तरह का प्रिपरेशन अभी से उनको करना चाहिए जो अभी विश्वविद्यालय में स्नातक है। यस सर। सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हमारे जो जूनियर फ्रेंड्स है, अभी फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, उन लोगों को अपने ग्रेजुएशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दे हैव टू बी वेरी गुड एंड गेट गुड ग्रेड्स इन देयर सेमेस्टर। उसके अलावा यूजुअली हमने देखा है कि इवन इन बिजी कोर्स एंड लेंदी कोर्स लाइक एमबीबीएस जो मैंने किया था, उसमें हमें काफ़ी टाइम मिलता है पढ़ाई के सिवा और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। यूपीएससी की आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस टाइम पे ले सकते हो, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड इस चीज़ में क्या क्या इस पूरे एग्जामिनेशन में कौन से रिसोर्सेस होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से बुक्स पढ़े जाते हैं। एक ब्रॉड आइडिया यू कैन ऑलवेज गेट। देर आर लॉट ऑफ टॉक्स अवेलेबल फॉर बिगिनर्स, available on the open source like YouTube. Second thing, this examination requires a lot of patience and understanding. तो आप ये patience, ये understanding, ये discipline जिसे बोलते हैं, you can build it by developing good habits. You can start reading a good newspaper like maybe Indian Express, Times of India. These are the two newspapers I keep on reading even after examination. It should become a part of your habit. इफ आपने ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी कर ली है, आपको एग्जाम का अंडरस्टैंडिंग का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, देन यू कैन ऑलवेज स्टार्ट प्रिपेयरिंग दोज सब्जेक्ट्स विच हैव एन ओवरलैप विद द यूपीएससी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो मेडिकल एमबीबीएस का सब्जेक्ट है, तो आई हैव चोजन मेडिकल साइंस एज माई ऑप्शन। तो आई कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग बेसिकली नोट्स फॉर माई मेडिकल साइंस एज ऑप्शन। अगर आप में से कोई हिस्ट्री कर रहा है या कोई जोग्राफी भी में ग्रेजुएशन कर रहा है, तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग कि बाबा ये सब्जेक्ट्स, इनमें से अगर मुझे कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है तो व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट्स, व्हाट इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप उसके नोट्स अपने लेवल पे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आज के टाइम पे तो काफ़ी ओपन सोर्स में अवेलेबल है। ऑल द टॉपर्स, ऑल द एजुकेशनल कोचिंग क्लासेस, दे कीप ऑन प्रोवाइडिंग ओपन सोर्स नोट्स, ओपन वीडियोस। तो आप उससे आपका एक बेसिक कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। बट आई थिंक गोइंग बियॉन्ड दैट सीरियस प्रिपरेशन तो आपको आपके ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू कर लेनी चाहिए, बिकॉज समवेयर तो आप ग्रेजुएशन को आपके बेसिक ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रोमाइज करोगे इफ यू विल फुल टाइम जंप इनटू दिस, विच इज़ नॉट desirable. Believe me when I say this, whenever you will reach the interview stage, whatever you have read in your graduation will come handy, and it will create an impression of what kind of student, what kind of सिंसियर स्टूडेंट यू वेर इन योर कॉलेज डेज। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड इम्प्रेशन कि आपके कॉलेज डेज में जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स है उसके बेसिक्स भी आपको आज याद नहीं है, बिकॉज आपने कॉलेज के वक्त अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। सो एज अ डॉक्टर आई एम रिक्वायर्ड टू नो द बेसिक्स ऑफ मेडिकल साइंस। सेम गोज फॉर ऑल माई जूनियर फ्रेंड्स। यस सर, दैट विल बी फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सर। अभी आपने मेडिकल साइंस और ये सब चीज़ें आपने अभी बताई है। तो मैं अभी जो अलग अलग जगह से हमारे दोस्त यहाँ पे ज्वाइन हुए वाले हैं इस सेशन के लिए, तो मैं आपसे, आपका मेडिकल साइंस था, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस जो आपने लिया था ऑप्शन, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए जिस वजह से उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर हमारा जो यूपीएससी है वो क्रैक होने में मदद होगी। यस सर। सो यूजुअली डॉक्टर्स या जिन्होंने एमबीबीएस किया है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, समटाइम्स डेंटल स्टूडेंट्स एंड बीएमएस स्टूडेंट्स टू चूज मेडिकल साइंस एज देयर ऑप्शन. It is, I'll say, in the decreasing order or in the hierarchy, easier for the postgraduates, somewhat less easier for the MBBS, and still less easier for BMS and other allied medicine students. एक बार आप बहुत अच्छे से
there are again many talks available on this particular subject, whether medical science should be chosen as an optional subject or not. You go through that, you go through the syllabus and previous year questions कि क्या आपने जो अभी तक ग्रेजुएशन में पढ़ा है और इसका जो सिलेबस है इसमें कोई तालमेल है क्या. Are you having that confidence कि I will be able to clear it? Because the most important thing while choosing an optional is that आपको अपने ऑप्शनल से प्यार होना चाहिए. You should love your subject. In the best case scenario, you are going to spend 2 years with your optional subject, and in the worst case scenario, the time can increase. So you should not get fed up with your optional. Having said so, आपको दो तीन और चीज़ों का भी ध्यान रख लेना चाहिए. This I'm talking about choosing optional subject. Number one is you should be very comfortable, very आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए आपके ऑप्शन में और आपका competency उसमें होना चाहिए. And medical science being a very technical optional subject, आप only a very niche students are able to take it. सेकेंड फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर्स वो भी इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में यूजुअली कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट का सक्सेस रेट कितना रहा है, इस ऑप्शनल में कोचिंग क्लासेस एनवायरनमेंट कितना अवेलेबल है, सपोर्ट सिस्टम कितना है. For medical science, I'll say the things have improved in the last 3-4 years since when I started to prepare. Now there are some good classes, including IDI Institute. They do provide notes and test series. Medical science के लिए now the students have consistently been scoring above 270s, even though we are not able to cross this 300 mark for some time. We do get 2-digit rank. We get into the top services, IAS, IPS, IFS. So with a very good strategy, you can crack into even the best ranks. Taking medical science is optional. What are the cons of medical science? Medical science is a very lengthy subject. आपको काफ़ी अच्छे से और काफ़ी लंबे समय तक उसको पढ़ना पड़ेगा. In nutshell, the 5.5 years of MBBS is compressed into 2 papers. Second, the paper is rewarded comparatively less compared to some other optional subject. Say, जो इंजीनियर फ्रेंड्स हैं हमारे जिनका मैथमेटिक्स ऑप्शनल हो या कोई एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है. One of the reasons for this is perhaps these optional are taken by more candidates. So I think differentiation उनमें उतना ज़्यादा हो जाता होगा, but it is what it is. So these are the factors you take into account while choosing. Once you have chosen, then there is no turning back. Then a second year or third year or fourth year final year student has to I'll categorize them into two categories. जो लोग अपने इंटर्नशिप में ये डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि आई टुक माई डिसीजन ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप. For them, I think it is better to join a coaching class which acts like a catalyst to make your notes, to handhold you into this journey of UPSC, and to solve your doubts. You can do it without coaching classes as well, but coaching classes will shorten your journey, will make it easier. If you are in second year or third year, you have ample amount of time. You can start making your own notes, and then after you have 100% focused yourself in this preparation, you can take that call at that point of time कि हमें आपको कोई coaching class join करना है या नहीं. It is always desirable that you join at least the test series so that you get an idea of whatever content, whatever notes you have made, whether you are able to write it in that 3-hour time window and you are able to get the best out of your notes. But I think that is the decision to be taken after 2 to 3 years when you are graduating. Right now, what you can focus on is going through the syllabus, going through the PY questions, and start preparing your notes. अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, in my time forensic medicine used to be in second year as well. Then your पैथोलॉजी, इन सब के आप जितने जितने सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और वो नोट्स आपके PYQ पे डिपेंडेंट होने चाहिए. So that could be easily done, I think. That will be from my side, sir. थैंक यू सर. अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन है उनसे मैं विनती करता हूं अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए. उससे पहले लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, व्हाट पीपल शुड डू फॉर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, प्रायोरिटाइजिंग सब्जेक्ट्स ऑफ मेंस और प्रीलिम्स और ऑप्शनल, क्लासेस टू बी अटेंडेड टिल व्हेन, रिवीजन स्ट्रेटजी एंड नोट्स मेकिंग. Okay, lot of questions bundled into one. I will try to remember and address each question one by one. Yes. So,
First, if you are attempting for 2025, so you have more than 1 year, at least 1 year of time. If you have not done any foundation and you're just starting, I will strongly advise you join a very good foundation course in any reputed class, बिकॉज उसके वजह से होगा ये कि आपके नॉलेज गैप में, आपके नॉलेज बेस में जो गैप्स होगी, जो अदरवाइज एड हॉक प्रिपरेशन करने की वजह से आती जाएंगी, वो कम होती जाएगी. There is no class, no course which is 100% foolproof for UPSC exam, but some courses, some foundations are better than the rest. So that will be one. Second, आप प्रीलिम्स और मेंस के प्रिपरेशन शुरुआत में बिल्कुल साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, बिकॉज 70-75% देर इज एन ओवरलैप. In main examination, the extra subjects are like Indian society, internal security, your optional, then this ethics GS4. So these are the extra subject. अगर उनको छोड़ दे तो ये दोनों एग्जामिनेशन का साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन हो सकता है. Regarding revision, sir, I think once you have understood, you have learned the basic topics in your foundation course, उसके बाद आप उस सब्जेक्ट की एटलीस्ट 3 रिवीजन इस टाइप से शेड्यूल करने का कोशिश कीजिए कि नंबर 1, फर्स्ट रिवीजन आपकी हो जाए एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर योर कोर्स इज डन. सेकेंड रिवीजन 1 या 2 हफ्ते के गैप से हो जाए, और थर्ड रिवीजन 1 और 2 मंथ्स के गैप में हो जाए. सो दीज पीरियोडिक रिवीजन काइंड ऑफ पेनिट्रेट दीज कॉन्सेप्ट्स इनटू योर माइंड. और उसके बाद 3 बार रिवीजन करने के बाद आई डू नॉट थिंक दैट एग्जाम के पहले एक बार पढ़ने के बाद आपको वो चीज़ें भूलने का कोई मौका है. रिवीजन में सर बहुत बार बच्चे डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पैसिव रीडिंग एंड एक्टिव रिकॉल. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉल, जहाँ पे आप जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है वहाँ पे यू क्लोज योर नोट्स एंड यू ट्राई टू रिमेंबर, ओके आज मैंने जो चीज़ सीखी है या 2 हफ्ते पहले मैंने जो चीज़ सीखी थी उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे जो मैं अभी बाय माई सेल्फ याद कर पा रहा हूँ. सो दिस इज अ वे बेटर मेथड दैन जस्ट पैसिवली अपने नोट्स खोल के हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 4. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन मेन एग्जामिनेशन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन है एंड यू हैव टू राइट इट. उसके लिए आपके दिमाग में पॉइंट्स ऑलरेडी होने चाहिए एंड एक्टिव रिकॉल हेल्प्स यू in getting those points. Also, in both prelims and mains, try to come up with mnemonics, tricks, some visual memory, some personal आपका some connection with whatever you are reading, which will help you to recollect the thought. For example, sir, गुड गवर्नेंस एक टॉपिक होता है. गुड गवर्नेंस के 8 ये होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, विच इज बिन डिफाइंड बाय वर्ल्ड बैंक. उसके लिए एक अच्छा निमोनिक है क्रैप ट्री, CRAPTRW, जहाँ पे गुड गवर्नेंस के 8 पॉइंट्स दिए हैं. तो C फॉर कंसेंसस ओरिएंटेड, R फॉर रिस्पॉन्सिव, A फॉर अकाउंटेबल, P फॉर people oriented or something like that. So basically what I'm trying to make is पढ़ते पढ़ते ही you try to remember these things, and if you're not able to, आप ऐसे कोई ट्रिक्स बना दीजिए, निमोनिक्स बना दीजिए जो आपको एक्टिवली याद रहने में मदद होगी. अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट आपके साथ रहेगा ही रहेगा, बट जो चीज़ें फैक्ट बेस्ड है, जो डेटा बेस्ड है, आप अपने लेवल पे कंटिन्यूसली ट्राई टू कम अप विथ दिस इनोवेशंस, जिससे आपको जिससे आपको याद रहने में, मेमोराइजेशन करने में मदद हो. Have I left some part of the question? Let me check. 2 सवाल यहाँ पे आए हैं सर. Yes. इनमें से पहला है अमित कुमार का, जो पूछ रहे हैं कि सर सोर्सेस को लेकर कंफ्यूजन होता है एंड करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करें. Okay, मैं पहले सेकंड क्वेश्चन को एड्रेस कर लेता हूँ. फॉर मी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, after all these years and experience, I have finalized into 2 phases. Number 1, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग. आप जब शुरुआत कर रहे होगे आपके जर्नी की, तब मे भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी. स्टिल यू कीप ऑन रीडिंग. एज एंड व्हेन आपका फाउंडेशन कोर्स पूरा होगा या फिर आपने जहाँ से भी पढ़ाई की है वहाँ पे चीज़ें पूरी होती जाएगी, आपको न्यूज़पेपर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगी. आई लाइक इंडियन एक्सप्रेस बेटर देन अदर न्यूज़पेपर्स, क्योंकि उसका कवरेज थोड़ा सा UPSC स्पेसिफिक होता है. टाइम्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो गुड. द हिंदू अर्लियर यूज्ड टू बी गुड, बट आई डू नॉट रियली प्रेफर इट. ये न्यूज़पेपर को आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए इन द इनिशियल फेजेस. आपको उससे ज़्यादा पढ़ना भी लग सकता है. इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन पेज आता है, दैट इज़ वेरी यूजफुल. यू शुड टेक अ वेरी गुड नोट ऑफ इट. Second part of current affairs preparation is reading either the monthly current affairs magazine or
the compilation which comes just before examination. तो इससे दो चीज़ें हो जाएगी. नंबर वन, आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा था वो आपका रिवाइज हो जाएगा. क्योंकि न्यूज़पेपर में ऑलरेडी एक न्यूज़ 2-3 दिन, 3-4 दिन, समटाइम्स 6-6 महीने चलती है. लाइक वी हैव बीन सीइंग द इजराइल हमास वॉर, सो द न्यूज़पेपर हैज बीन कवरिंग इट सिंस लास्ट 6 to 7 months. उसका एक कंपाइलेशन में आपको एक स्नैपशॉट में सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी जिसके जो फैक्ट्स है. सेकंड, करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपसे न्यूज़पेपर कभी ना पढ़ा गया हो, या आपसे कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ कवर ही ना की हो, तो दैट विल आल्सो गेट कवर्ड. सो दीज आर द टू वेज इन विच यू कवर योर करंट अफेयर्स. एंड ये करंट अफेयर्स आपका बाकी जो जो स्टैटिक नोट्स है उससे बहुत अलग नहीं होना चाहिए. करंट अफेयर्स एक अलग सब्जेक्ट नहीं बन जाना चाहिए. करंट अफेयर्स आपके जो बेसिक नोट्स हैं उनमें इंटीग्रेट हो जाना चाहिए. अगर आप डिजिटल नोट्स बना रहे हो तो उसमें, फिजिकल नोट्स बना रहे हो तो उसमें, बट इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर बेसिक नोट्स. इनफैक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु विल बी राइटिंग मेंस दिस टाइम इज दिस, दैट आपके जो माइक्रो नोट्स होते हैं विच यू रीड जस्ट बिफोर 1 or 2 days बिफोर एग्जामिनेशन और बिटवीन these two papers, 2 घंटे का जो समय मिलता है, तो you should make it a point that your micro notes should cover all those points which you think are necessary for you to read before this, just before this examination. It is very very important to make these micro notes. Second, the first जो question था कि आपको sources क्या पढ़ने चाहिए, तो आई थिंक इसका इस चीज़ का बेसिकली कोई बहुत अच्छा, बहुत यूनिवर्सल एक आंसर नहीं है. आई कैन शेयर विथ यू माई सोर्सेस, बट इफ़ यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन क्लास एट एनी गुड कोचिंग क्लासेस, से विजन IAS हो गया, वाजीराम हो गया, IAS हो गया, these are some standard classes. So I think you should rather rely on your faculty. These are those people who have experience of guiding the aspirants into success for 5 years, 10 years, sometimes 15 years. So these are very experienced people. I strongly believe in respecting that experience and going with them. If you are not a part of any foundation coaching class, आप self prepare कर रहे हो, so you have to be even more careful, even more vigilant. I could share subject wise how did I refer to. For example, in GS1 there are 3 subjects. For history, I took guidance of Pratik Naik. उनके बहुत सारे open source में available है. I am assuming कि आप NCERT पढ़ के आ रहे हो और हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का NCERT आपने पढ़ लिया है. आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू द डेप्थ्स कि आपको कौन सी NCERT पढ़नी है, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन नॉलेज अमंग अस नाउ. आपको हर सब्जेक्ट का आई थिंक एटलीस्ट 10th 11th 12th का NCERT, तो 11th 12th का तो NCERT पढ़ ही लेना चाहिए. सम NCERTs आर बेटर देन अदर्स. दिस विल बिकम सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन इटसेल्फ अगर हम उसमें घुस जाएंगे. तो बेसिकली आई एम सेइंग कि NCERT तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके आगे की बात कर रहा हूँ. So for GS1 history, I took the coaching of Pratik Nayak. For GS geography, I took different sources. मैंने कुछ एक हिमांशु शर्मा फैकल्टी उनसे पढ़ा था. For society again, it was a hodgepodge experience. विजन में I took the vision material. For GS2, Empuri notes for polity, international relations, more or less मेरा जो बेस था वो करंट अफेयर से ही बना था. There is a topic of social justice and governance again from the newspapers. Not one very good source. For GS3, I will give a big credit to Quality Enrichment Program QEP नाम का एक course I had done at IAS Hub. So I scored very well in GS3 this time, one of the highest marks in the main examination. For GS4, again I took the coaching the guidance of ISF faculty, Mr. Piyush Kumar. For medical science, I had taken UPSC Medico. I also was in touch with IDI, but tab tak I had already made my foundation. I had already done my notes, so I did not really take the test series. But I was in touch with Adesh sir and Gajanan sir. So these are my sources. But again, I will say कि rather than blindly following my sources, आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे sources देंगे. You stick to one and you revise it multiple times. That is the actual crux, rather than going for और नया मार्केट में क्या मिल रहा है और नया मार्केट में क्या मिल रहा है, और उसके चक्कर में जो आपका बेसिक सोर्स है उसको सिर्फ एक या दो बार पढ़े. एक या दो बार में पढ़ के you will not be able to recall in the heat of the moment in the examination. So multiple revisions of limited content. That will be my answer. Okay, sir. I just want to ask one question, please. That since you are already into the service and then you appeared, because I am also into the service under the CCS, Center Civil Service. So if I have to appear this time,
So when I applied, I think we have to take NOC at the time of interview. So there are two channels. One is the application is sent through proper channel. One is that we have to give the intimation. So I think if we have to appear for UPSC, there is only intimation and there is no process of going the application through proper channel. So I just want some clarity on that part, being into the service already. I must confess that I am not aware of this particular question or its answer. I'll share what I did. I got into Indian Railway Management Services in 2022, and there was an option given by UPSC for those candidates who are already into services. So I had mentioned it into that option. It comes into DAF 1. I have absolutely no idea whether this is to be intimated by these channels, NOC and all. I think you will have to look for someone more qualified than me for that. As in, basically, when you applied, so were you already into the service? Were you already service in the railway service? I was part of the railway services, but I was on leave. EOL, extraordinary leave. Okay, so when you applied, basically you intimated the department or not? Or because you have to resign also, and at the time of resignation, you have to, at the time of interview, you have to appear, like you have to appear and you have to produce NOC. So you might be asked in DAF 2 about whether already working in the service or whether already given any undertaking or intimation to your current employer. I read the notification this year actually. Perhaps this NOC concept would come into picture when you are already a probationer and you are actually taking or actually undergoing the training. Since I was an EOL, there was neither the demand from UPSC that you produce an NOC, neither there was any option from the in IRMS, the railway department, to give an NOC. And I think I have not received any such request from both the parties. So at least for EOL people, there is no problem. You can just go there and give the interview. I can confirm with those of my friends who are already into services and they have appeared for the interview. Whether they had to take an NOC from their department, I will have to check that. And how can I connect to you, please? Even I am a medico, I am a doctor. So regarding this service part, so if I have to connect to you, then how? Because don't have your contact or something. I I'm think basically from Chandigarh. I am not in any- Delhi right now. I was in Delhi earlier. I think anyone from IDI could share my number with you. I have uh, my number is available with Adesh sir and Gajanan sir, so I think they will be able to help you out. Okay, all right. Okay, I know them. I'll connect to them. Yes, yes. Okay, thank you. You're welcome. Sir, there are ongoing foundational competitive exam classes conducted by IAS Delhi Institute for SRT MUN students. It is a daily 2 hours covering UPSC syllabus, including CSAT. Purpose is to have a foundational study of subjects while in college. Students can then join classes in Delhi. How students can make best use of these ongoing classes? So this is actually a little bit tricky question for me because I was neither part of this process, nor I have really watched any videos of or anything of this matter. The only uh, experience of IS Delhi Institute of me has been through Adesh sir and a little bit of interaction regarding medical science. So I think I'm not the proper person to answer this question. Okay, sir. Okay, sir. Some other questions in chat box. Uh, रविंद्र सिंह यादव, जीएस एंड ऑप्शनल कितना टाइम डिवाइड करना चाहिए, ऐसा कुछ तो भी उन्होंने सवाल पूछा है चैट बॉक्स में. Okay, so if the question is this कि between the 3 months of prelims and mains और otherwise उससे पहले भी कितना टाइम prelims और mains में divide prelims sorry कितना टाइम GS और ये option divide होना चाहिए. ऑप्शन So I think there can be no one answer. Depends on many factors. आपका optional कितना strong है. Like is it the first time that you are appearing और आपने इससे पहले भी optional दे चुके हो और आपके अच्छे marks आ रहे हैं. नंबर 1 उसके हिसाब से कम ज़्यादा होगा टाइम. नंबर 2 आप अपने ऑप्शनल सॉरी आप अपने जीएस में कितने कॉन्फिडेंट हो. सम गाइडलाइंस कुड बी डिराइव लाइक सेकंड ये भी होगा कि आपका ऑप्शन कितना लेंथी है. फॉर एग्जांपल ऑप्शन लाइक मेडिकल साइंस इज वेरी लेंथी एंड इवन विद द बेस्ट ऑफ
notes and a lot of revision, you will have to give at least 30 days between these 3 months or 3.5 months, between prelims and mains for medical science. Not whole 30 days, but I will say half of your time, say 6 से 7 घंटे. अगर आप 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ रहे होगे एग्जाम के बीच में, तो हाफ ऑफ योर टाइम विल हैव टू बी गिवन टू मेडिकल साइंस. दैट इज लाइक द बेयर मिनिमम. दिस विल इंक्रीज अगर आप फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट दे रहे हो, अगर आपके नोट्स तैयार ना हो, अगर आपके नोट्स तैयार है बट वो पार्शियल है, अगर आपने कभी टेस्ट ही नहीं लिखा हो और यू आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग कि उसके लिखा जाता है हाउ टू राइट इट. बट बेयर मिनिमम इज दिस. सेकेंड, आई थिंक योर ऑप्शनल शुड नॉट टेक मोर देन 30% ऑफ योर ओवरऑल टाइम. अगर आपके पास 90 डेज है तो 30-40 दिन से ज़्यादा तो ऑप्शनल को लेना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपका जीएस थोड़ा सफ़र करेगा. दीज आर ब्रॉड पॉइंट्स. पीपल can absolutely ignore them and still clear this examination because it is very individual. इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए जैसे दिसंबर खत्म होता है, एटलीस्ट जनवरी के बाद तो फरवरी में आपको प्रीलिम्स की तैयारी शुरू ही कर देनी चाहिए. बट दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल. देर आर सम पीपल, फॉर एग्जाम्पल मी, who have successfully cleared the prelims examination in row because we do have an understanding of how to do it. So perhaps I can do it in 2 months as well. But someone who is very good in writing the examination, जिसका writing skill बहुत अच्छा है, but prelims के लिए जो skill set है उनका इतना अच्छा ना हो, उनके लिए शायद उनको prelims की तैयारी ज़्यादा करनी चाहिए. और मेरे लिए मुझे writing practice ज़्यादा करनी चाहिए because this is somewhere I need to improve upon. So it has to be subjective, but बहुत extremes में नहीं जाना चाहिए, like 30% of the times for your option. This is my opinion. थैंक यू सर. मुझे लगता है नीचे जो 3 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं तो उनके जवाब सर ने इन सेशन के इन बिटवीन ही दिए हैं. सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो सही कुलकर्णी. माय क्वेरी इज रिगार्डिंग द इंटरव्यू. दे माइट आस्क द क्वेश्चन व्हाई यू ऑप्शन दिस फील्ड रादर देन you can do best in your field in which you have get graduate degree. How to deal with this type of questions? So basically these are the questions which are especially asked of doctors, sometimes from those IIT graduates who are working in prestigious companies. And it is but natural to ask that coming from such good privileged profession, why are you leaving it? Iska bhi again, you have to give as honest answer as possible. For me, my answer was very simple. I am and will always remain a good doctor. That is my identity. But I want to go beyond the limitations of medical profession. Like a doctor may or may not be able to make the level of change that a civil servant can make. The scale or the impact, which is the forte of civil services, is sometimes not possible in medical profession. I could give an example. Like in OPD, I could see maybe 30, 40, 50 patients max. And I can make change, definite good change, but it will be on a limited scale. A civil servant, on the other hand, will be able to make that same level of change using policy making, using good implementation of the schemes on thousands and lakhs and crores of people. So the scale is at a huge another level. And I have someone who has always had a social bent of mind. So that is why I wanted to rather change or make this attempt, and never had this regret that I could do it, but I simply chose to close my eyes and not pursue this path, even though the opportunity was available to me. सर एक सवाल है. मैथमेटिक्स अगर वीक है तो सीसेट समझने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इस सब्जेक्ट को कैसे कवर करें? So the same problem will happen to all of us at some point of time, because UPSC में हम at least 12-15 नए सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं. For me, coming from medical background, मुझे इकोनॉमिक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई हैड एक्चुअली अ फियर और अ फोबिया ऑफ इकोनॉमिक्स. तो the same thing might be true perhaps for you for mathematics. हमें एक डर होता है उस सब्जेक्ट में. We do not like to learn what we do not understand, what we fear. तो यूपीएससी में you have to overcome that fear. एंड आपका माइंडसेट ये चाहिए कि आई ऑलवेज गिव दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस फ्रॉम मांझी द माउंटेन मैन मूवी.
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आपको उसको मास्टर करना पड़ेगा। देयर कैन बी 17 डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। आप उसके बेसिक्स में जाइए, आप अच्छे क्लास को ज्वाइन कीजिए, आप उसके फैकल्टी में जाइए, आप उससे एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। आप ये समझने की कोशिश कर लीजिए कि आपको इस सब्जेक्ट में कौन से लेवल तक मास्टरी करनी है। आपको यूपीएससी किस लेवल तक मास्टरी एक्सपेक्ट कर रहा है। हमें मैथमेटिक्स में तो मास्टरी करनी है नहीं। आई थिंक किसी का माइक ओपन हो गया है। या सो यू हैव टू बेसिकली हैव दिस माइंडसेट कि होगा कैसे नहीं। यू हैव टू बिकम दैट वन लेवल टफर देन यूपीएससी। कि आपके सामने ये डिफिकल्ट चैलेंज आ गया तो आप उसको कैसे ओवरकम करोगे। एंड इट कैन बी डन। फॉर एग्जाम्पल, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स कम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, तो उन्हें भी सिमिलर इशू आता है मैथमेटिक्स का। यू always can find it, like I said in my CSAT talk, you focus on your comprehension. Around 27 questions are from comprehension. In fact, in theoretically, if you solve only comprehension and get all the questions correct, then you will barely cross that 67 marks threshold. And with just zero question for mathematics, you theoretically could clear this examination. Now, let us not go there. You can pick and choose at least 5 to 10, 10 to 15 easy question from mathematics. उतना तो आप कर सकते हो। उतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। And then you focus more on comprehension. As I said, you have to achieve a basic competency in all the subjects of UPSC. और उसको basically जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Yes sir, that is from my side. One last question, sir, from Masira Tabassum. Sir, how to prepare for essay writing? Okay, so before I answer this question, I must confess that I have not really scored very good marks in essay examination, either this year when I got selected or last year. Both times I have scored average. So whatever I say, take it with a pinch of salt. For essay writing, I think you should be prepared in two ways: philosophical essay, GS based essays. Essay writing is different from the GS rest of the papers in that you get an opportunity to show your writing style, how good you can write, आपके flow, your grammatical, uh, your prowess of the English language, या आपके जो thoughts and ideas है, you can express it in the best manner. Number one, getting good anecdotes, good quotes, good stories. So just like rest of the papers, you start making notes for your essays as well. Number two, join any test series for essay, practice it. I think you should join. I have just realized this year that you should join more than one test so that you get diverse feedback from different backgrounds. And number three is uh, having this realistic expectation that in spite of your best effort, you may, or because there is some amount of luck involved in essay, because there is some amount of subjectivity, you can have a realistic expectation of scoring 120 plus, considering the marking scheme of this year. But yes, उससे आगे a little bit of luck, little bit of your own original thinking, your own original examples, and your hard work will sail through.